children, how are you? I hope you all are loving all these English chapters that you are reading. Do you love the poems also? They are so beautiful. Okay, they express so many things. They teach us so many good lessons. Now children, let's look at our chapter which we are going to read now. Okay, the name of the chapter is A Rupee Goes a Long Way. What is this chapter about? What is this telling us about the rupee? We don't know what the chapter is. We have to read the prologue for that. Let's look at the prologue. There is a certain magic and delightful wonder in childhood. Parents and teachers have a tremendous responsibility to protect the innocence of children. Let them explore the world through their own experiences, sometimes good and sometimes bitter. Let them cope with the uncertainties and insecurities of life on their own. They will surely find their way like Ranji did in this story. So बच्चों, जो ये childhood होता है, बचपन, it's the most beautiful phase of our life. Okay, we are always inquisitive. हमें हर चीज़ जाननी होती है, हर चीज़ करनी होती है. आपको भी ऐसे feel होता होगा कि I want to explore this, I want to try that, I want to do that. But your teachers, your parents will always protect you. At the same time, sometimes you will also see कि अगर parents को लगता है कि okay, there is no risk involved in that particular situation where it's not going to harm you, okay, आपको कोई चोट नहीं पहुंचने वाली है, तो फिर then what they do is they let you explore things on your own. Okay, they let you try things on your own, let you take your own experiences, make your own experiences, create your own stories, learn from your own mistakes is what sometimes parents and teachers also let you do. Okay, from those experiences, it's not necessary that you will always have good experiences. कभी कभी हमारे साथ bad experiences भी हो सकते हैं. But क्या होता है, जो हमारे experiences होते हैं वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं. अब इस स्टोरी में रंजी के साथ भी उसके बचपन में ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से उसने उस चीज़ का सामना किया है. He's faced it and now it's going to help him in his life. So let's read the story to understand what has happened with Ranji. Okay, before that let's do a warm up. When you go to the market to buy something, you see there are many tempting things in the shops. How do you deal with such temptations? तो कभी कभी आपकी मम्मी है आपको बोलती कि बेटा मार्केट जाके ये लेके आओ या ब्रेड लेके आओ फॉर एग्जाम्पल. तो आप जब ब्रेड लेने जाते हो तो आप देखते हो शॉप के अंदर टॉफ़ीज़ है, चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत सारी चीज़ें. आपको टेम्पटेशन तो होता ही होगा. तो उस टाइम आप क्या करते हो? Do you go back home only with the bread or do you take other things also with you and go home? What do you do in that situation? And do you think if you take the other things along with you, is that the right thing to do without asking your parents? Or when you go empty-handed, do you ask your parents ki I love that chocolate or I saw that chips and I wanted it? How do you do that? So discuss with your friends and your classmates and your teachers also, okay? And see what experiences they have. So now let's read this chapter to see what has happened with Ranji, okay, his experience. Ranji had a 1 rupee coin. So he made his way to the Jamna sweet shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee's worth of jalebis. तो रंजी के पास एक 1 रुपी का कॉइन होता है. वो लेके जाता है जमुना स्वीट शॉप में, उसको टॉस करता है, काउंटर पे रखता है और कहता है कि मुझे 1 रुपए की जलेबियाँ दे दो. The shopkeeper looked at the coin carefully. That coin's no good, he said. Are you sure? Ranji asked. These coins went out of use long ago, said the shopkeeper. It isn't old enough to be valuable and it isn't new enough to buy anything. तो जो शॉपकीपर होता है वो कॉइन देखता है और उसको कहता है कि ये कॉइन तो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे. इट इज़ नॉट ओल्ड इनफ ओके टू कीप इट एज अ वैल्यूएबल एंड इट इज़ नॉट इनफ न्यू इनफ रादर टू बाय एनीथिंग. तो जो शॉपकीपर होता है वो उसको कहता है कि ये जो कॉइन तुम्हारे पास है वो अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे. ओके, इट्स आउट ऑफ मार्केट नाउ. सो रंजी shrugged, took the coin back and turned onto the road. अब रंजी को पता नहीं था, उसने अपने कंधे हिलाए and he just started walking back.
Soon Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? It was Mohinder Singh, Ranji's friend. In one hand, Mohinder held a homemade fishing rod. तो जैसे ही वो वापस जा रहा होता है उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है. तो जो आवाज़ होती है वो होती है मोहिंदर सिंह की, जो रंजी का दोस्त होता है. और उसके हाथ में क्या होता है? एक होममेड, घर पे बनाया हुआ फिशिंग रॉड. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सेड रंजी. वेयर आर यू गोइंग? आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, Mohinder said. I was fishing in the canal all morning. Ranji stared at the fishing rod. Will you lend it to me? He asked. You'll only lose it or break it, Mohinder said. But I don't mind selling it to you. 2 rupees. I've got 1 rupee, said Ranji. But it's an old one. The sweet seller would not take it. Please let me see it, said Mohinder. He took the coin and looked it over. I don't suppose it's worth much, but my uncle collects old coins. Give it to me and I'll give you the rod. All right, said Ranji, happy to make the exchange. He took the fishing rod, waved goodbye to Mohinder and set off. तो जो रंजी का दोस्त होता है वो उसको पूछता कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. तो उसने मोहिंदर से पूछा रंजी ने तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जाके आ रहा हूँ. आई वॉज सिटिंग बाय द कनाल ऑल मॉर्निंग एंड फिशिंग. तो फिर रंजी जो होता है वो फिशिंग रॉड को देख के उसको पूछता है क्या तुम मुझे अपना फिशिंग रॉड दे दोगे? तो मोहिंदर कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो इसको घुमा दोगे या तोड़ दोगे, बट मैं तुम्हें वो बेच सकता हूँ. आई कैन सेल इट टू यू, 2 रुपीज़ लगेंगे. तो रंजी कहता है मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है, वो भी पुराना वाला है, वो जो स्वीट सेलर था उसने भी नहीं लिया. तो मोहिंदर उसको देखता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं उन्हें पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने की आदत है, तो ठीक है मैं ले लूँगा. और वो ऐसे लेके उसको वो फिशिंग रॉड दे देता है. ओके. आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग. Ranji knew the driver and waved and shouted to him until he stopped. Will you take me to the river? Ranji asked. I'm going fishing. Climb up in the back, the driver said. Ranji climbed into the back of the open truck. Soon he was watching the road slide away from him. In a while, the truck stopped near the riverbed. Ranji got down, thanked the driver, and began walking along the bank. तो जैसे वो चलने लगता है वो देखता है कि एक ट्रक आ रहा है, तो उसको हाथ दिखाता है. ही न्यू द ड्राइवर ऑफ द ट्रक. तो वो उनसे पूछता है कि आप मुझे रिवर तक लिफ्ट दे दोगे, आप मुझे छोड़ दोगे? तो वो बैठ जाता है ट्रक में और फिर वो देखता है कि वो जो रोड होता है इट्स लाइक स्लाइडिंग अवे फ्रॉम हिम एंड देन फाइनली ही इज रीच द रिवर. ओके. Ranji got down, thanked the driver and began walking along the bank. It was dry season and the river was just a shallow, muddy stream. Ranji walked up and down without finding water deep enough for the smallest of fish. No wonder Mohinder let me have his rod, he muttered, and with a shrug, he turned back. तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो ड्राई सीज़न है. जब पानी शैलो हो जाता है, बरसात होती है तब पानी रिवर में भरा रहता है. जब धूप होती है, जब गर्मियों का सीज़न होता है तब पानी कम रहता है. तो ये उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो शैलो सीज़न है, अब तो रिवर में पानी ही नहीं है, उसको कोई भी मछली नहीं मिलने वाली है. अब उसको रियलाइज़ हुआ कि मोहिंदर ने उसको वो फिश रॉड क्यों बेचा. ओके. और वो वापस जाने के लिए निकलता है. So children, quickly do the My Performance Tracker to figure out how much you've followed the story so far. Okay? Now, it was a long, hot walk back to the bazaar. There were ripe mangoes on the trees, and Ranji tried to get at a few of them with the tip of the fishing rod, but they were well out of reach. He thought again of the jalebis that he had not been able to buy. He had reached a few scattered houses when he saw a boy playing a flute. In the stillness of the hot afternoon, the flute made a cheerful sound.
तो फिर रंजी निकलता है, बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, फिर उसको भूख भी लग रही होती है। वैसे ही उसको जलेबी वाले ने तो जलेबी दी नहीं थी, उसको वो भी याद आ रहा था कि उसने उसको मना कर दिया था। मैंगोज तोड़ने की कोशिश की उसने ट्री से, बट ही कुड नॉट गेट एनी मैंगोज। ओके, और जैसे ही वो पास हो रहा था उसके कानों में एक सुंदर सी धुन पड़ गई। ओके, सो ही वाज लाइक वंडरिंग व्हाट इज दिस साउंड कमिंग, व्हाट इज दिस लवली चीयरफुल साउंड कमिंग फ्रॉम। उसको रियलाइज हुआ कि एक छोटा बच्चा होता है, एक बॉय होता है जो फ्लूट प्ले कर रहा होता है। सो Ranji stopped walking. The boy stopped playing. The boy had his eye on Ranji's fishing rod. Ranji had his eye on the flute. Been fishing? Asked the flute player. Yes, said Ranji. Did you catch anything? No, said Ranji. I didn't stay very long. There was a long silence. Then Ranji said, It's a good rod. This is a good flute, said the boy. Ranji took the flute and examined it. He put it to his lips and blew hard. There was a shrill, squeaky noise and a startled magpie flew out of a mango tree. So, वो जो बच्चा होता है, वो लड़का जो होता है, यंग बॉय, ही लुक्स एट रंजीज हैंड. वो देखता है कि उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड है. तो ही हैज़ हिज आइज ऑन द फिशिंग रॉड एंड रंजी हैज़ हिज आइज ऑन द फ्लूट दैट द बॉय इज प्लेइंग. तो वो उसको पूछता है कि तुम फिशिंग गए थे? कहते हैं हाँ. तो कुछ मिला? नहीं, मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, ऐसे रंजी ने उसको कहा. और फिर उसके बाद जो बॉय होता है, रंजी जो होता है, वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में तो बहुत अच्छी फ्लूट है. तो कहते हैं हाँ. और फिर वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है रंजी. और तभी एक मैगपाई जो होता है, एक बर्ड होता है मैगपाई, वो मैंगो ट्री से उड़ने लगता है. सो रंजी सेज नॉट बैड. द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी and was looking it over. Not bad, he said. Ranji hesitated no longer. Let's exchange. तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की चीज़ों को एग्जामिन किया, जैसे फ्लूट को एग्जामिन किया और रॉड को एग्जामिन किया, और उन्होंने सोचा कि क्या एक्सचेंज कर ले हम लोग. तो उन्होंने तुरंत उसको एक्सचेंज कर लिया. A trade was made. The boy took the fishing rod and went on his way, leaving Ranji with the flute. Ranji began playing the flute. The notes sounded lovely to him, but they startled people who were passing on the road. When he came to the clock tower where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. तो ये ट्रेड तो हो गया. अब वो लड़का चला गया, वो उसका फिशिंग रॉड लेके, और रंजी के पास फ्लूट आ गई. अब रंजी अपना फ्लूट बजाते बजाते बाज़ार तक पहुंच गया, और जो आसपास जाने वाले लोग थे, उसका जो फ्लूट से साउंड आ रहा था वो काफ़ी श्रिल के जैसा था. इट वाज लाइक नॉट गुड टू द ईयर, इट वाज नॉट साउंडिंग सो गुड. तो सब उसको देखे जा रहे थे, और फिर वो एक जगह पे बैठ के फ्लूट बजाता है बाज़ार के यहाँ पे वॉल के पास. तो एक बच्चा है, वो आके उसको बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा बजा सकता हूँ. वो बच्चा जो होता है उसके पास काफ़ी सारे एम्प्टी खाली मिल्क कैन्स होते हैं. तो रंजी कहता है लेट्स सी. द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून. यू कैन हैव इट फॉर ₹1, सेड रंजी. तो रंजी क्या कहता, उसको दे देता है, बोलते हैं देखते कितना अच्छा बजाते हो. तो वो फ्लूट लेता है और वो बजाना शुरू कर देता है. एंड दैट ट्यून इज़ रियली लवली. तो रंजी उसको बोलता है कि हाँ तुम रख लो, बट उसके बदले मुझे ₹1 दे दो. यू कैन कीप इट फॉर ₹1. I don't have any money to spare, said the boy, but you can have this necklace. He showed Ranji a pretty necklace of brightly colored stones. तो अब वो बच्चा कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मेरे पास ये नेकलेस है, तुम ये नेकलेस रख लो. ओके, और उसने रंजी को वो प्रिटी नेकलेस दिखा दिया जिसमें अलग अलग किस्म के ब्राइट कलर्ड स्टोन्स थे. The stones are very precious, said the boy. They were found in the mountains near Tibet. Ranji knew the stones had little value, but they were pretty, and he was tired of the flute. They made the exchange, and the boy went off playing the flute. Ranji was about to thrust the necklace into his pocket when he noticed a girl staring at him. Her name was Kokhi, and she lived close to his house. तो
रंजी देखता है कि उसमें स्टोन्स तो लगे हैं, बट वो समझ में आता है कि उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी वो उसके पास से वो नेकलेस ले लेता है, बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ द फ्लूट एंड ही जस्ट वांटेड टू गिव अवे द फ्लूट टू दैट child. Okay, the child, that other boy takes the flute and he starts playing it and he leaves from there. अब जैसे ही रंजी अपने पॉकेट में वो नेकलेस रखने वाला होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पे जो उसको स्टेयर कर रही होती है. ओके, उसका नाम होता है कोकी. ओके, और वो वहीं पे आसपास कहीं रहती है. हेलो कोकी, ही सेड. सो रंजी न्यू हर. ओके, व्हाट्स दैट you've got, Ranji? A necklace. Would you like to have it? Oh, thank you, said Koki, clapping her hands with pleasure. 1 rupee, said Ranji. Oh, said Koki. She made a face, but Ranji was looking the other way and humming. Koki kept staring at the necklace. Slowly she opened a little purse, took out a shining new rupee, and held it out to Ranji. Ranji handed her the necklace. Then he ran across to the Jamna sweet shop and tossed the coin on the counter. Jalebis for a rupee, he said. The sweet seller studied the coin carefully and said, always at your service. He filled a paper bag with hot jalebis and handed them over. When Ranji reached the clock tower, he found Koki waiting. Oh, I am so hungry, she said, giving him a shy smile. So they sat side by side on the low wall and Koki helped Ranji finish the jalebis. सो बच्चों, व्हाट हैपन्स इज, अब रंजी जो कोकी होती है उसकी नज़र तो रंजी के पास जो नेकलेस होता है उस पर होती है. तो रंजी कहते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा ये नेकलेस अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो, बट मुझे उसके बदले में चाहिए 1 rupee. तो कोकी मेक्स अ फेस, but then she gradually, because she cannot take her eyes off the necklace, she gives the 1 rupee to Ranji. Now Ranji takes that 1 rupee and runs to the sweet seller shop because उसके दिमाग में तो जलेबी थी. तो वो वहाँ पे जाता है जमुना स्वीट शॉप पे और फटाफट जाके 1 रुपए की जलेबियाँ लेता है. अब जो जलेबी वाला जो होता है वो उसका कॉइन चेक कर लेता है और देखता है कि हाँ ये तो नया कॉइन है, एंड ही सेज ऑलवेज एट योर सर्विस सर, और उसको जल्दी जल्दी जलेबी देता है. और जलेबी लेके वो जैसे ही वापस जा रहा होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है कोकी पे, जो उसको देख के कहती है आई एम सो हंग्री, और वो दोनों मिलके वहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के जलेबियाँ खाते. सो चिल्ड्रन, so this chapter also tells us that where there is a will, there is a way. इसके दिमाग में पहले से ही था, तो he made so many attempts. Okay, so many things he attempted just to get that jalebis for him. See, he tried a lot. So never give up. You will always find a way. Okay, so now quickly reread the chapter, learn the important words, and don't forget to do the back exercises.